अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th बायोलॉजी के प्यारे स्टूडेंट्स। बॉटनी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका दिल से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आज हम थ्योरी एंड लॉ और मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के टॉपिक्स को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पे पंजाब बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली इमेज से 1.7 थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, scientists use such hypothesis for making further hypotheses. When new hypotheses are again proved by experiments, the original hypothesis becomes a theory. A theory is supported by extensive evidence, repeatedly validated by multiple researchers. Example, the theory of evolution explains how species change over time through natural selection. उर्दू, जब experiments hypothesis को prove कर देते हैं तो वो theory बन जाती है। Theory extensive evidence से supported होती है और कई researchers validate करते हैं। Evolution की theory इसकी example है। From theory to law, principle. Scientists keep on testing theories by doing experiments. They try their best to disprove the theory. If a theory is proved again and again by experiments, it becomes a law or principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. Examples of biological laws. 1. Hardy-Weinberg law. 2. Mendel's laws of inheritance. Urdu. Theory को बार-बार टेस्ट किया जाता है। अगर वो continuously prove होती रहे तो law या principle बन जाती है। Biological laws की examples Hardy-Weinberg or Mendel's laws हैं। Scientists communicate the results, publish in journals and books, share findings, create scientific reports, and give presentations in meetings and seminars. Flowchart of scientific method. Biological problem to observations, to hypotheses, to deductions, to experiments, to results, to reporting, to theory or solution, to law or principle. Further testing continues. Ab 1,8 Malaria, an example of biological method. Malaria ist ein häufiges Krankheitsbild in vielen Ländern, unter anderem in Pakistan. In menschlicher Geschichte hat Malaria mehr Menschen getötet als jede andere Krankheit. Quinin war das einzige Heilmittel von früher Zeiten bis zum 20. Jahrhundert. Biologisches Problem 1. Was ist die Ursache von Malaria? 1. Observationen. Diese Krankheit war den Ärzten der antike Zeit bekannt, mehr als 2000 Jahre her. In dem letzten Teil des 19. Jahrhunderts gab es 4 wichtige Observationen. Malaria und marschige Gebiete haben eine Beziehung. Quinin ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von Malaria. Das Trinken des Wassers marschiger Gebiete verursacht nicht Malaria. Plasmodium wurde im Blut von Malaria-Patienten gesehen. In 1878 Frencher Army-Physicier Laveran beobachtete das Blut eines Malaria-Patienten unter Mikroskop und bemerkte Mikroorganismen. Er nannte es Plasmodium. 2. Hypothese. Plasmodium ist die Ursache von Malaria. 3. Deduktion. If Plasmodium ist die Ursache von Malaria, denn alle Malaria-Patienten sollten Plasmodium in ihrem Blut. 4. Experiment und Resultate. Biologen untersuchten Blutproben von 100 Malaria-Patienten und 100 gesunden Personen. Resultat: meist der Malaria-Patienten hatten Plasmodium in ihrem Blut. Die Hypothese wurde bewiesen. उर्दू, पहले प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया का कॉज क्या है। ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनी कि प्लाज्मोडियम कॉज है। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ऑब्जर्वेशंस, मॉस्किटो इज एसोसिएटेड विद मार्शेस. Drinking water of marshes does not cause malaria. People who slept outdoors had more chances of malaria. People who used mosquito nets had less chances. Individuals near smoky fire usually did not get malaria. Hypothesis by A.F.A. King. Mosquitoes convey plasmodium and are involved in the spread of malaria. Deduction. If mosquitoes are involved, then plasmodium should be present in mosquitoes. Experiments by Ronald Ross in 1898. He allowed female Anopheles mosquito to bite a malarial patient, then dissected it and found Plasmodium multiplying in its stomach. Then he used sparrows, allowed infected mosquitoes to bite healthy sparrows, and found Plasmodium in their blood.
Later experiments on humans confirmed that Anopheles mosquitoes transmit Plasmodium. Explanation: Plasmodium multiplies in the walls of the mosquito's stomach and then moves into its salivary glands. When infected mosquito bites, it transmits Plasmodium. Key points: Plasmodium multiplies in mosquito's stomach walls, then moves to salivary glands. Mosquitoes Culex and Anopheles transmit Plasmodium. Experiments on sparrows and then on human beings proved that mosquitoes are the carriers of malaria. Thus, mosquitoes are involved in the spread of malaria. Urdu: दूसरा प्रॉब्लम ये था कि प्लाज्मोडियम ब्लड में कैसे आता है. Ronald Ross के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि mosquitoes Anopheles Plasmodium ट्रांसमिट करते हैं. Plasmodium mosquito के स्टमक में मल्टीप्लाई होता है और salivary glands में चला जाता है. Dear students of Botany Study Hub, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें. Theory versus law, scientific method flowchart और मलेरिया के दोनों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के स्टेप्स याद करें. पंजाब बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. Best of luck. Study smart, score high. Allah Hafiz and thank you for watching.